Assalamu alaikum warahmatullah. Now we have discussed three states of matter, their properties. पहले भी मैंने बोला था there are not only three states of matter. States of matter can be many. अगर मैं ऐसे बोलूँगा there can be n states of matter, and maybe 4 and maybe 5 and maybe 6 and maybe 7. So till date जो किताबों में लिखा है there are 5 states of matter. 5 states of matter. First 3 states are solid, जो हमने पढ़ा था, solid, liquid and gas, जिसके बारे में सभी जानते हैं, solid, liquid and gas. But other 2 states of matter जिनका हमें introduction लेना है, these are plasma and Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate, and these are other 2 states of matter. Condensate. So plasma is the 4th state of matter. 4th state of matter. It actually this plasma state, which is 4th state of matter, it actually consists of this super energetic and super excited particles. Super energetic, they have extremely high temperature, extremely high energy. These particles which make up this plasma, they have extremely high energy, that is kinetic energy. They are moving with tremendous velocities. Super excited particles. These are super excited particles. यानी जो plasma है, actually the particles of the plasma है, they are in the form of ionized gases. The term is ionized gases. Means gases. Actually gas है, जो गैस हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स से के बने हैं, ठीक. मगर जो आयोनाइज्ड गैस मतलब है जो इनमें जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे लीव दियर न्यूक्लियस एंड मूव इंडिपेंडेंटली. यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव इंडिपेंडेंटली, nucleus move, that is positively charged, they move independently. That's ionized gas. Ionized gas. So plasma, what is actually plasma? The particles in the plasma, the particles of the plasma, they are in the form of ionized gases. ठीक. It is the 4th state of matter. It is considered as the 4th state of matter. So example जो अगर हम लेंगे on earth, examples क्या हैं on this क्या बोलते हैं plasma के on earth. Actually the fluorescent tubes जो हमने सुना है, fluorescent tubes हैं, neon cyan bulbs. Actually these contain fluorescent tubes, and neon cyan bulbs contain plasma. They contain plasma. They glow because of this plasma. Suppose अगर हम लेंगे एक कंटेनर लेंगे, suppose this is the container, it consists of gas. अब इसमें मगर यूजुअली लेना है inert gas यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक, xenon, radon, neon, ठीक, inert gas. Suppose you fill this container with argon, which is inert gas. जब हम इसको हम हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक,
टेम्परेचर यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या हाई टेम्परेचर देंगे इस गैस को, द आर्गन एटम्स जो हैं दे डिसोसिएट, यानी इनमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रेकअप होंगे। ब्रेकअप मतलब इलेक्ट्रॉन्स लीव देयर पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक। एंड आर्गन आयन्स इलेक्ट्रॉन लीव देयर डिसोसिएट, यानी ये डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाएंगे दूसरी तरफ न्यूक्लियस जाएंगे, यानी इसका मतलब है डिसोसिएट मतलब जो होगा गैस होगा डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स एंड आर्गन आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड आर्गन आयन्स। दिस सब्सटेंस जो उस वक्त सब्सटेंस जो बनेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर विच कंसिस्ट्स ऑफ आयन्स इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक। यानी कंटेनर हैं, इसमें गैस लेंगे आर्गन गैस, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर से ये डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाएंगे एक तरफ आर्गन आयन्स जाएंगे, ठीक। जो ये बनेगा दिस सब्सटेंस, उस वक्त जो सब्सटेंस उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। Plasma is formed when high temperature is when the gas is heated to extremely high temperature, about 10,000 thousands of about 10,000s of degrees Celsius, and about 10,000 or 15,000 Celsius degree temperature is given to the substance. When this temperature or heat is given to gas, but gas should be of low density, about 1000 when it is heated gas, it is transformed into ions and other positive ions, electrons and positive ions, and this state is called the plasma. It's called the plasma. So plasma it is actually, अगर हम बोलेंगे प्लाज्मा के बारे में, अगर ये हम बोलेंगे it is actually first state of matter. फोर्थ स्टेट हो गया अगर पढ़ेंगे हम लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस, मगर जो ये एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली इन द यूनिवर्स में यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो 99 मोर देन 99%, अगर मैं बोलूँगा 99.9, ठीक, 99% ऑफ दिस विजिबल जो है यूनिवर्स में विजिबल मैटर, यूनिवर्स का जो विजिबल मैटर है उसका 99% दैट इज एक्चुअली प्लाज्मा, which exists visible matter that is actually present in the state of plasma, more than 99%. For example, जो sun है, sun it is actually a giant plasma. It glows to the plasma. Stars are also, sun is also star. Stars are also luminous sphere of plasma. Luminous means which has its own energy, its own light. जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग इसको हम बोलते हैं त्रट कश्मीरी में, ठीक। द लाइटनिंग दे स्ट्राइक ड्यूरिंग दिस क्या बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, इट्स आल्सो प्लाज्मा। दिस इज एग्जांपल। मगर अगर हम अर्थ के बारे में जो एग्जांपल लेंगे, अर्थ पे एग्जांपल लेंगे, वो होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब्स, ठीक। These are actually plasma. They glow. These are because of the presence of plasma. यानी गैसेस जो प्लाज्मा में ट्रांसफर होते हैं जब हीट होते हैं। जो इसका मतलब है जो प्लाज्मा है, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअली अगर हम करेंगे, अगर एग्जांपल लेंगे ऐसे, ये कैसे जो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी कैसे मतलब ट्रांसफ़र होगा गैस इनटू बोज आइंस्टाइन प्लाज्मा। एक्चुअली अगर जो गैस ही जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर हैं वही ट्रांसफ़र होता है प्लाज्मा में। यानी सपोज़ हम एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे ये दिस इज़ द आइस, हम लेंगे इसका आइस, ये आइस क्यूब, इसको हम हीट करेंगे, आइस क्यूब वो है सॉलिड, व्हेन इट इज़ हीटेड ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड बनेगा ये
किससे? जब हम इसको हीट देंगे, व्हेन इट इज़ हीटेड, ठीक, फर्दर हीट देंगे, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू गैस। ये हो गया थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। फर्दर हीट देंगे, अगर हम फर्दर इसको हीट देंगे अबाउट thousands of degrees, when the temperature when the temperature reaches thousands of degrees, several thousand degrees, the gas, जो गैस हैं, ये गैस ये आयोनाइज्ड होगा, आयोनाइज्ड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, आयोनाइज यानी जो वास्ट इसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वो लीव होंगे, ठीक, वो अपनी जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसको छोड़ेंगे। वास्ट नंबर ऑफ molecules or atoms, they left with only nucleus. Since the electrons have separated, now the electrons have separated their nucleus. Due to this continuous supply of energy, heat. So this gas will be formed into an ionized gas. ionized gas, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनडैम्प्डली मूव होंगे, पॉजिटिव आयन्स हैं वो अनडैम्प्डली मूव होंगे, ठीक, इंडिपेंडेंटली मूव। दिस गैस उसको हम उस वक्त बोलेंगे आयोनाइज्ड गैस, यानी दिस आयोनाइज्ड गैस इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम्स भी होंगे, न्यूट्रल एटम्स and neutral molecules, positive and negatively charged ions, which they move independently, and this state is plasma. It is the fourth state of matter. So actually अब हम बोलेंगे ना कि नेक्स्ट जो स्टेट है, दिस इज Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate, ये इसका अपोजिट है, Bose-Einstein condensate, यानी हम प्लाज्मा गैस को हम जब इसको सुपर हीट करते हैं, ये प्लाज्मा में ट्रांसफ़र होता है। मगर जो ये Bose-Einstein condensate ये क्या है? एक्चुअली ये है इसका अपोजिट, यानी जब हम गैस लेते हैं इसको हम सुपर कूल करते हैं, एक नया स्टेट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड Bose-Einstein condensate. Yani it is considered it is the fifth state of matter. Bose-Einstein condensate. It is formed when the gas with low density, यानी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 1/1000 of air, 1000 to the air, 1000 to the air, 1/1000 या 1/100 to 1/100 या 1/1000 to the density of normal air होना चाहिए इसका जो डेंसिटी। जब वही एयर लेंगे, लो डेंसिटी एयर लेंगे, इसको कूल करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर्स, वेरी टेम्परेचर, यानी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया 0 केल्विन, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। इतना हम इसको कूल करेंगे, ठीक। उस वक्त क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा वो होगा स्टॉप होगा। वो मॉलिक्यूलर मोशन जो मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं वो क्या होंगे? स्टॉप होंगे, ऑलमोस्ट स्टॉप होंगे, ठीक। जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, दे नो लॉन्गर रिमेन सेपरेटेड, यानी जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो जो ये सेपरेट होते हैं, ठीक। मगर यहाँ जब हम कूल करेंगे, दे डू नॉट रिमेन सेपरेटेड, दे स्टार्ट क्लम्पिंग इनको बनेगा क्लम्प, ठीक। उस वक्त इसको बोलते हैं सुपर एटम्स, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, बड़ा ग्रुप, लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स इज फॉर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लम्पिंग ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, दे नो लॉन्गर remain separated, ठीक। एक्चुअली जो ये Bose-Einstein का, इसमें जो है बोस, ये एक्चुअली है इंडियन साइंटिस्ट, इसको SN बोस बोलते हैं, SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। इसने ये प्रेडिक्ट किया था 1920 में ये स्टेट,
प्रेडिक्ट किया था। लेटर जो आइंस्टाइन ने इसको क्या किया था, इसने एसन बोज ने प्रेडिक्ट यह किया था, कैलकुलेशंस की थी इसके बारे में, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उस जो कैलकुलेशन के बिना पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के न्यू स्टेट इसको प्रेडिक्ट किया था, न्यू स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, हैंस द टू नेम्स बोज एंड आइंस्टाइन, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2001 में जो है 2001 द टू साइंटिस्ट्स कॉर्नेल एंड वाइमन of USA, they were given the Nobel Prize for physics, because they have successfully created this Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. It is the fifth state of matter. जो मैं बोलूँगा एसन बोज एंड आइंस्टाइन जो प्रेडिक्ट किया था इसके बारे में इन 20s, but they did not have at that time, they did not have modern equipments and facilities to make it happen at that time. प्लाज्माज अगर बोलेंगे, प्लाज्मा जो है सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स हैं, सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स, इसका जो अपोजिट है वो है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट टोटल अपोजिट टू दिस प्लाज्मा. They are actually super unexcited and super cooled atoms. Plasmas are super hot and excited atoms, whereas Bose-Einstein condensate, they are super unexcited and super cooled atoms. This is ये हो गया इसके बारे में, and the other two states of matter. And thanks.